गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Hello everyone, welcome you all to today's online session for Statistics Standard 11, chapter number 3rd, that is chapter number 3rd, that is measure of central tendency. In this particular chapter we will be learning about mean, median, mode, geometric mean, then combined mean, then weighted mean, then quartiles, deciles, percentiles. Okay, so starting with the first topic of this particular chapter, that is called the mean. Mean is termed as the average, denoted by x bar. Denoted by x bar, which you already know that. Okay, so mean, how to find mean? If it is ungrouped data, means discrete number. If it is only xi, if it is only xi, suppose the numbers are 10, 12, 14, 16 and 18. Okay. So first of all, with the direct method. Direct method, x bar equal to sigma xi upon n. Okay, x bar equal to sigma xi upon n. We got to add this number 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 70. So 70 upon 5, your x bar equal to 14. This is by direct method. Second is by shortcut method. So x bar equal to a plus sigma di upon n. Second is my shortcut method. X bar equal to a plus sigma di upon n. So you got to find the value for di. xi minus a, any number you can assume, but the range must be between 10 to 18. इसके बीच में लो, आप इसके बाहर भी कोई भी नंबर लोगे तो भी चलेगा, but I want कि आप इसके बीच में लो. So I'll be assuming 15. I'll be assuming 15. 10 minus 15 is minus 5. 12 minus 15 is minus 3. 14 minus 15 is minus 1. 16 minus 15 is 1. 18 minus 15 is 3. The answer is minus 5. So I have assumed 15 minus 5 whole upon 5. 15 minus 1 plus minus minus 5 1 ja 5. Okay, so the answer is same. 170. Okay, this is the discrete number. This is the discrete number. Okay. Okay. One more with frequency. If it is with frequency. Okay. Supposedly 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5 and 6. So first of all, we will solve it by direct method. Solve it with direct method, where the formula will be x bar equal to sigma fi xi whole upon n. The formula will be sigma fi xi upon n. We got to multiply fi with xi. 10 2s are 20. 11 3s are 33, 12 4s are 48, 13 5s are 65, 14 6s are 84, 2 5 9, 14 20, this is my 20, let me add this number, 20, 20, 50, 90, 150, 230, 230, 233, 241, 246, 250.
250. So 250 upon 20, x bar is equal to 12.5. Whatever answer you are getting, start keeping it in the box itself. With the help of shortcut method, x bar equal to a plus sigma fi di upon n. Okay, क्या करना है? xi का only xi था, तो only xi था only xi. xi with frequency is f sigma by xi. अब n क्या हो जाएगा? टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा. only xi था तो di, only di. with frequency है तो अब मुझे करना पड़ेगा fi di. तो पहले उसके लिए di के लिए नंबर एज्यूम कर लेता हूँ. let me assume the number is 12. या चलो 10 एज्यूम कर लेता हूँ. 10. Okay. 10 minus 10, 0, 11 minus 10, 1, 12 minus 10, 2, 13 minus 10, 3, 14 minus 10, 4. Then करना है मुझे fi into di. Then करना है मुझे fi into di. Okay. 2 zeros are 0, 3 ones are 3, 4 twos are 8, 5 threes are 15, and 6 fours are 24. Let me add these numbers. 20, 30, 34, 39, 47, 50. What have I assumed? 10 plus 50 upon 20. 10 plus 2.5. Your x bar answer is same once again. Okay. अब डायरेक्ट करो या शॉर्टकट करो. In both the ways, your answer will be the same. आप खुद ही चेक कर सकते हो फिर कि आपका आंसर सही है कि नहीं है. Okay. The next one. If it is continuous, that is class दिया. सपोज 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से लेके 40 एंड 40 से लेके 50. ये अगर आपको लेके रखा है तो फ्रीक्वेंसी दिया है सपोज 2, 3, 4, 5, 6. अगर मुझे करना है वंस अगेन डायरेक्ट मेथड, I want to solve it with the help of direct method. Okay, the formula is saying sigma fi xi upon n. Formula will be the same, sigma fi xi upon n equal to fi. Okay, so पहले मुझे फाइंड करना पड़ेगा मिड वैल्यू, that is xi. So 5 इन दोनों को प्लस डिवाइड बाय 2, that's for the मिड वैल्यू. 10 का गैप है तो मैं 10 10 प्लस करता रहता हूं. Okay, then I multiply fi with xi. 10, 45, that is 100, 35 into 5, 175, 45 into 6, 45 2s are 90, 90 into 3, 270. इसको प्लस किया 20. Let me add this number. 20, 200, 300, 400, 470, 540, 580, 590, 600. Okay, so 600 divided by 20, your x bar is 30. Your x bar is 30. Okay. अगर मुझे करना है शॉर्टकट मेथड, करना है अगर मुझे हमें, ओके, इन दैट पर्टिकुलर केसेस आपको अप्लाई करेंगे फॉर्मूला. अगर आपको करना है शॉर्टकट मेथड, इसमें अप्लाई करेंगे फॉर्मूला x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi di अपॉन n. अब करना है मल्टीप्लाई बाय c. क्लासेस दिया तो करना है मल्टीप्लाई बाय c. ओके, सो di को लिखना पड़ेगा xi माइनस a अपॉन c. xi माइनस a अपॉन c. आपने एज्यूम कर लिया, ये एज्यूम करना है xi में से 25 मिडल में, जो मिडल में आया जो भी नंबर एज्यूम कर सकते हो, नो डाउट. क्लास लेंथ सेम है, लिख दो 0. क्लास लेंथ सेम है, लिख दो 0. ओके, ऊपर जाए तो -1 -2, नीचे जाए तो 1 2. जितना ऊपर जाए -1 -2 -3 -4, नीचे आए तो 1 2 3 4. तो ये क्लास लेंथ सेम हो गई. मैं आपको ये प्रूव भी कर देता हूं. मैंने एज्यूम किया 25. xi क्या है 5 -25 -20. -20 में क्लास लेंथ कितनी है 10. गैप लेंथ का -20 अपॉन 10 आगे -2. 15 -25 that is -10. -10 upon 10 that is -1. वैसे आ जाएगा. देन आपका fi di करना है. 2 into -2 -4, 3 into -3, 3 into -1 -3, 4 into 0 is 0, 5 into 5, 6 2s are 12. सॉल्व करते हैं. 12, 17 minus 7 that is 10. You assume the number as 25.
upon 20 multiplied by 10. Okay. So 25. 10 into 10 is 100 upon 20. 21 ja 25 sir. So 25 plus 5, your x bar answer is 30. As you can see, by applying both the methods, okay, I have found that the answer will be the same. The answer will be the same by applying both the methods. Okay, I hope so you understand the basics of this mean. This thing you have already learned in standard 11, standard 10 itself. You have already done that mean, median, mode. So a recapitulation of that, a revision of that, also you can say. कुछ नया नहीं है, जो आपने सीखा था ये वहाँ पे वही है, कुछ नया तो है नहीं. ओके, इसको बोलते हैं स्टेप डिविएशन मेथड बोलते थे, डीआई वाला. ओके, वही सेम है, बस अब दो ही है मेथड. अज्यूमिंग मेथड स्टेप डिविएशंस को आप अलग करके अलग बोलते थे, यहाँ पे सिंगल में कन्वर्ट यहाँ पे कर दिया गया है. आई होप सो mean topic is very much clear with you. Continuing further with the illustrations given in the textbook. Okay, you got to solve these sums also and the illustrations which I have explained you in the further video. Continue watching the video till the end. Hello everyone, welcoming you all on today's online session for statistics, standard 11, chapter number 3, measure of central tendency. In this chapter we are going to learn about the mean, median, mode, quartile, decile and percentile. You have already learned about mean, median and mode in standard 10th. Okay. In mean, you have learned three methods of finding the mean, that's called average. Median means the middle number, and mode, the highest repeated frequency. The highest repeated number, okay, is called as the mode. So over to here, we will be learning about the three topics. Along with that, we will also be learning about quartiles, deciles and percentiles. So what do you mean by, first of all, central tendency? Okay, it's given over here. In most of the graphs drawn for the various frequency distributions, one can observe a common pattern that the values of the variable are concentrated around a certain central value. एक particular value, central value के आसपास सारे values यहाँ पे basically दिखते हैं हमें. तो the characteristics of the data उसको बोलते हैं central tendency. सेंटर से ही सब नंबर डिसाइड, जैसे एवरेज मतलब सेंटर होता है, तो उसी के आसपास सराउंडिंग द सेंट्रल टेंडेंसी एंड द सेंट्रल वैल्यू अराउंड विच द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल आर कंसंट्रेटेड, उसको बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, या तो उसको बोलते हैं उसकी एवरेज वैल्यू. जो वेरिएबल्स यहाँ पे होते हैं दैट्स कॉल्ड द सेंट्रल टेंडेंसी, और उसका जो एवरेज होता है इसका द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और द यू कैन से द एवरेज वैल्यू. ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, किसको मैं मानता हूँ कि भाई एक अच्छा है सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, कौन सा वाला दी बेस्ट यहाँ पे है, तो कैसे डिसाइड यहाँ पे कर सकते हैं, आइडियल कैसे डिसाइड हम लोग कर सकते हैं. इट शुड बी वेल डिफाइंड एंड रिजिड होना चाहिए. इट शुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेशन के लिए भी ईजी होना चाहिए. इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द डेटा. सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करना हो तो आपको सारे ऑब्जर्वेशन लेने चाहिए. ऐसा नहीं कि फर्स्ट वाले को छोड़ दो, सेकंड वाले को छोड़ दो, लास्ट वाले को छोड़ दो, ये नहीं. सब नंबर्स को लेके जो एवरेज निकालता हो उसको मानते हैं आइडियल एवरेज है, आइडियल सेंट्रल टेंडेंसी है. इट शुड बी सुटेबल फॉर फर्दर एल्जेब्रिक ऑपरेशंस में भी काम आना चाहिए. इट शुड बी अ स्टेबल मेजर होना चाहिए. इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ एवरेज फाउंड फॉर डिफरेंट सैंपल ऑफ सेम साइज फॉर द सेम पॉपुलेशन शुड बी ऑलमोस्ट सेम. अगर मैं सैंपल्स का लूँ, अलग अलग सैंपल्स का लूँ एवरेज और सेम पॉपुलेशन का लूँ एवरेज, तो दोनों का ऑलमोस्ट सेम यहाँ पे होना चाहिए. It should not be unduly affected by few large or very small observations. बहुत ज़्यादा भी observations ना हो कि अफेक्ट करे, और बहुत कम भी observations ना हो कि भाई अफेक्ट यहाँ पे करे. ठीक है, तो आपको ये ध्यान यहाँ पे देख के करना है. बेसिकली इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, मीन, मीडियन एंड मोड. सो अरिथमेटिक मीन और यू कैन से मीन. ओके, मीन मतलब क्या होता है, द एवरेज वैल्यू. ओके, द अरिथमेटिक मीन इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑब्टेन बाय सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन. जितने ऑब्जर्वेशन आपको देखे रखेंगे उसका मैं सम करूंगा, उसको मैं प्लस करूंगा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो वी विल गेट द आंसर दैट इज कॉल्ड एज द अरिथमेटिक मीन. मीन्स मीन. मीन इज डिनोटेड बाय एक्स बार. ओके, मीन इज डिनोटेड बाय एक्स बार. अगर रॉ डेटा है या डिस्क्रीट डेटा है, ओनली एक्स आई देके रखा है, आप सभी नंबर को प्लस करें, यू विल गेट सिग्मा एक्स आई. ओके, होल अपॉन एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यू विल गेट द आंसर फॉर एक्स बार, दैट्स कॉल्ड मीन. Illustration number 1. The following data show the number of scooters repaired daily at a garage
Find the mean number of scooters repaired per day. Mean number मतलब average you got to find. You are given with xi, तो आपने xi के सारे numbers को plus किया. 7 plus 13 20, 20 plus 4 24, plus 8 32, plus 6 38, plus 9 47, plus 10 57, plus 4 61. 61 divided by 8 is 7.625. On average we can say it is 7.63. Thus the mean number of scooters repaired per day at a garage is 7.63 scooters. Then shortcut method means in that you got to assume a number from the particular range, highest number, lowest number में से कोई भी एक particular number उसके बीच में से आपको लेना है. Okay, आप कोई भी number ले सकते हो, it's not like that, but आप उसके बीच में से कोई भी number ले लो, उसी में से लेना नहीं है, उसके range के बीच में से आप कोई भी number ले लो. जैसे कि the rainfall in millimeters at 10 different places of a district are recorded as follows. So 126, 110, 91, 115, 112, 80, 101, 93, 97, 113. ओके, तो इन्होंने एक्सआई एज्यूम क्या किया है, 100 एज्यूम किया. तो हर एक नंबर में से आपने 100 को माइनस किया. ओके, जो भी नंबर्स आपका फिर आया डी, उसको लिखा डी एक्सआई माइनस ए, एज्यूम किया आपने 100. हर एक एक्सआई की वैल्यूज में से आपने 100 को लेस किया. जो आपका आंसर है उसको अब मैंने सम अप किया, तो आई गॉट सिग्मा डी एज 38. द फॉर्मूला फॉर इट इज एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी आई अपॉन एन. एज्यूम क्या किया था आपने 100, सिग्मा डी आई का आंसर क्या आया आपका 38. एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 10, तो 38 अपॉन 10 इज 3.8. 100 प्लस 3.8 इज 103.8. सो द मीन रेनफॉल इज 103.8 मिलीमीटर. आप डायरेक्ट से भी कर सकते हो, सभी नंबर को प्लस कर दो, आपका 1380 आ जाएगा. डिवाइडेड बाय 1038 आ जाएगा. Divided by 10, you will get the answer as 103.8. Illustration number 3. The mean weight of the group of 20 persons was found to be 55 kg. मतलब आपको n दे के रखा है 20, x bar का आंसर आपको दे के रखा है 55. Later on, it was discovered that one of them reported higher weight as 45 kg, which was actually 54 kg. किसी एक ने ऐसा बताया कि मेरा 45 था एक्चुअली, लेकिन उसमें 54 था. तो मैंने 45 को लेके इसका मीन फाइंड किया, तो 55 आंसर आया था. तो वो मेरा मीन गलत है, तो मुझे वापस से सिग्मा एक्स आई फाइंड करना पड़ेगा. तो एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन. एक्स बार कितना है 55, सिग्मा एक्स आई मुझे पता नहीं है, एन यहाँ पे 20 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 55, तो वी विल गेट सिग्मा एक्स एस 1100. वी गॉट ये जो सिग्मा एक्स आई आपको मिला है, इसके अंदर आपने भूल से 45 लिखा था, आना चाहिए 54. तो वी विल फाइंड करेक्टेड सिग्मा एक्स आई. तो 1100 माइनस जो रॉन्ग नंबर क्या था 45 और करेक्ट नंबर क्या था मेरा 54. तो माइनस 45 प्लस 54 किया, तो आई गॉट 1109 आई गॉट द आंसर. सो करेक्टेड मीन इक्वल टू करेक्टेड सिग्मा एक्स आई अपॉन एन. तो 1109 अपॉन 20, तो करेक्टेड मीन इज 55.45. ग्रुप डेटा मतलब क्या होता है आपका क्लासेस वाला, वी कैन से. ओके, विथ फ्रीक्वेंसी यू कैन से इट इज अ ग्रुप डेटा. ओनली डिस्क्रीट नंबर, अनग्रुप्ड डिस्क्रीट नंबर. ग्रुप मतलब हैविंग द फ्रीक्वेंसीज. ओके, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली इन अ सर्टन एरिया. फाइंड द मीन नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली. नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज एक्स आई and number of families as fi. You got to multiply xi with fi, you will got fi xi. 0 into 4 is 0, 1 into 8 is 8, 2 into 23 is 46, 3 into 8 is 24, 4 into 6 is 24, and 5 into 3 is 15. Adding the numbers of fi xi, we got sigma fi xi as 117. Adding the number of frequency, we got n as 52. Applying the formula, direct method, x bar equal to sigma fi xi upon n. 117 upon 52 is 2.25. The average mean of number of children per family is 2.25 children. If we want to go for shortcut, then this just a small change. A plus sigma fi di upon n multiplied by c. Okay, when the classes is given, you got to multiply it with c. Okay. As such, you can see from here, the day time in minutes taken by a bus to travel between two towns on different days is shown in the following table, as we can see. Okay, so you are given with time, we considered it as xi. Okay, number of days will consider it as fi. Okay, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, शॉर्टकट से करना है. तो आई हैव अज्यूम्ड डी आई हैव अज्यूम द नंबर एज 120. तो xi में से मैंने हर xi में से मैंने 120 को लेस किया. ओके, देन आई गॉट द टेबल कॉलम एज ऑफ डी आई.
So say 110 minus 120, that is minus 10. 113 minus 120, that is minus 7. 120 minus 120, that is 0. 122 minus 120, that is 2. And 126 minus 120, that is 6. Once I got the d, xi minus a करने से मुझे यहाँ पे d मिला. I got to multiply d with f, तो I got fi di. 7 into minus 10 is minus 70. 17 into minus 7 is minus 119. 11 into 0 is 0. 10 into 2 is 20. 5 into 6 is 30. Solving, adding the numbers of FIDI. Okay, I got sigma FIDI as minus 139. I assume the number 120. I got sigma FIDI as minus 139. N is 52. Keeping into the formula, x bar equal to a plus sigma FIDI upon n multiply by c है नहीं क्लास लेंथ, इसलिए 1 लिखा है उन्होंने यहाँ पे. वी विल नॉट राइट इट, नहीं दिया तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन लिख के छोड़ सकते हैं. सो ए इज एज्यूम इज 120 प्लस एफ आई डी आई द आंसर वॉज माइनस 139 अपॉन एन इज 52. तो माइनस 139 अपॉन 50, सॉरी इट इज़ 50. माइनस 139 अपॉन 50 इज minus 2.78. तो 120 minus 2.78 is 117.22. So the mean travel time for the bus is 117.22 minutes. The price of an item changes from shop to shop. The following data are available. Find the mean price. You are given with xi. We are given with number of shops. Price as xi, number of shops as fi. तो प्राइस आपको दे के रखा है, तो एक्स आई एफ आई लिया. एज्यूम किया उन्होंने यहाँ पे 220. तो हर एक एक्स आई के नंबर में से मैंने यहाँ पे 220 माइनस किया एंड डिवाइडेड बाय सी किया है इन्होंने यहाँ पे. क्लास लेंथ 2 की डिवाइड बाय सी किया. आप नहीं सी करोगे तो भी चल जाएगा, बट दे हैव डन. तो मैं आपको इनकी मेथड समझा देता हूँ, ठीक है, जो इन्होंने यहाँ पे किया है. बिकॉज सब नंबर डिविजिबल बाय 2 होते हैं, तो इसलिए इन्होंने डिवाइड बाय 2 करके रखा है. तो एक्स आई एफ आई 206 minus 220, that is 14, minus 14 divided by 2 is minus 7. 212 minus 220, that is minus 8 divided by 2 is minus 4. 218 minus 220, that is minus 2 divided by 2 is minus 1. 220 divided by minus 220 is 0 divided by 2 is 0. 224 minus 220 is 4 divided by 2 is 2. 230 minus 220 is 10 divided by 2 is 5. Then multiplying fi with di, 5 7 ja 35 minus 35. Okay, then 8 into minus 4 is minus 32. 9 into minus 1 is minus 9. 14 zeros are 0. 3 2s are 6. 1 5 is 5. Fi di total is minus 65. So x bar equal to a plus sigma fi di upon n multiplied by c. You have assumed the number as 220. Sigma fi di is minus 65 upon n is 40. Multiply by 2. You have assumed the classes as 2 because सारे number 2 से divisible थे, इसलिए c लिया मैंने यहाँ पे 2. Okay. So minus 65 upon 40 multiply by 2 is minus 3.25. 220 minus 3.25. We got the answer as 216.75. The mean price of an item is 216.75. For continuous frequency distribution, this was for discrete one. Now about the continuous frequency distribution. Continuous means where the classes will be given. Okay. So the formula, direct method, if it is direct method, अगर आपको class दिया है, frequency दे के रखा है, you just got to find the mid value, means xi. Then you got to multiply fi with xi, you got fi xi. Then total of fi xi is called as sigma fi xi upon total of f is called n. Okay, so sigma fi xi upon n करोगे by direct method, you will get the answer. Okay. If it is shortcut one, then the formula for it will be x bar equal to a plus sigma fi di multiply by n upon n multiply by c. Okay. As you can see in lesson number 7, the following data represents monthly income in rupees of workers in a factory. Find the mean income. So income is given in terms of continuous frequency distribution, that is class, and number of workers are given. Okay. So first of all, if we will solve it with the help of direct method, then we will got to find the mid value. So how to find the mid value, that you already know. 2000 plus 3000 divided by 2 is 2500. As you can see, the class length सबकी 1000 का ही gap है.
तो एक बार आपको पहले क्लास का मिल गया मिड वैल्यू 2500, फिर आपको सब में 1000 प्लस करना है. So you'll get the mid values. Okay, 2500, 3500, 4500, 5500, 6500, 7500, 8500. Then once you got the mid value, they have solved with the help of shortcut method. So D equal to xi minus a upon c. Assume किया उन्होंने 5500 मिड वैल्यू के सेंटर पे दिया है जो आपने भी सीखा था. उस पर लिख दो 0, ऊपर जाए तो -1, -2, -3, नीचे जाए तो by 1, 2, 3. भाई -3 कैसे आया? I got to prove that 2500 is xi, assume is 5500, so it is -3000, divided by c, class length is 1000, so I got -3. Same way 3500 minus 5500 is -2000, divided by 1000 is -2. So this way we will get the values for di. Then we got to multiply di with fi. We'll get fi di. 2 3s are -6, 3 into -2 is -6, 7 into -1 is -7, 15 into 0 is 0, 25 1s are 25, 16 2s are 32, 12 3s are 36. Adding that number, I got sigma fi di as 74. Applying the formula for x bar equal to a plus sigma fi di upon n multiplied by c, assumed 5500, sigma fi di is 74, your n is 80, and the class length is 5000. Multiply 74 with 1000, I got 74,000, divided by 80, I got the answer as 925. 5500 plus 925 is 6425. The mean income of this worker is 6425. Next, illustration number 8. The data about weight of mangoes from a tree are as follows. Moreover, the minimum weight of this mangoes is 410 grams. Find the mean weight of the mangoes. Once again, see the table is given as below 420, below 430, below 440, below 450, below 460 and below 470. Means it's less than numbers, as you can say. So from this we can convert the table into classes as such. Below 420 means 410 to 420, 10 का गैप है. ओके तो 410 से लेके पहला 420 लिया मैंने यहाँ पे. मिनिमम वेट उसने ऑलरेडी देखे रखा है ऊपर क्वेश्चन में 410 ग्राम. तो 410 से लेके 420 14, 420 से लेके 430 34 minus 14 is 20, 430 to 440 76 minus 34, then 420 to 430, okay 76 minus 34, no first of all 410 to 420 is 14, then 420 to 430 is 34 minus 14 is 20, then 430 to 440 76 minus 34 is 42, 440 to 450 is 130 minus 76 is 54, 450 to 460 is 165 minus 130 is 35, and 460 to 470 is 180 minus 165, that is 15. एक एक नंबर आपको आगे से माइनस करते हुए चलना है. You will get the row as number of mangoes, you will get the answer for number of mangoes. Once you are clear with the classes and the frequency, then you can apply the formula for x bar. Okay, got to find d equal to x minus a upon c. First of all, you will find the mid values. I hope so that you are very much able now to find the mid values. Still, I'll explain you once again. 410 plus 420 divided by 2 is 415. Class length is 10. Add 10 to each of the numbers of mid values. 415 the first number, plus 10 425, plus 10 435, plus 10 445, plus 10 455, plus 10 465. Then di xi minus a upon c. Assume the number 435 as 0. क्लास लेंथ सेम है तो ऊपर जाओगे तो -1 -2 -3 आता है, नीचे आओगे तो 1 2 3 आता है. आपने ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है. देन मल्टीप्लाई fi विथ di. 14 into -2 is -28, 20 into -1 is -20, 42 into 0 is 0, 54 into 1 is 54, 34 2s are 70 and 15 3s are 45. Solving the numbers of fi di, I got sigma fi di as 121. Putting the number into the formula, x bar equal to sigma fi di upon n multiplied by c. Assume is 435, fi di is 121, your n is 180 and the class length is 10. Okay, 121 into 10 is 1210, divided by 180, so I got the answer as 6.7222. Adding 6.7222 to 435, we got 441.72. The mean weight of mangoes is 441.72 grams.
Illustration number 9. The distribution of the annual sales tax of different companies in a zone is given below. Find the mean sales tax of these companies. As we can see from the given table, the class length is unequal. 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 50 and 50 to 70. Okay. So when the class length is unequal, okay, you can find mean with the help of shortcut method even, but the thing is that your DI जो अभी तक हम कर रहे थे, जैसे सेंटर पे हमने 0 लिखा, उसके ऊपर जाते तो -1 -2 -3 लिखते हैं, नीचे आते तो 1 2 3 4 लिखते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है क्लास लेंथ का अनइक्वल है। तो सी व्हाट दे हैव डन, क्लासेस दिया है, फ्रीक्वेंसी वी ऑलरेडी हैव, वी गॉट द फाइंड द मिड वैल्यूज। आपको हर एक की मिड वैल्यू अब फाइंड करनी पड़ेगी बिकॉज द क्लास लेंथ आर अनइक्वल। 0 to 10 बीच में 5, 10 to 20 बीच में 15, 20 to 30 मिड वैल्यू 25, 30 to 50, 30 plus 50 80, डिवाइड बाई 2 is 40, 50 plus 70 120, डिवाइड बाई 2 is 160. Got the mid values as xi. Assume किया उन्होंने 25. So now xi minus a upon c, क्लास लेंथ उन्होंने 5 का लिया है। ओके, आप 5 का लोगे तो भी चलेगा, आप 10 का लोगे तो शायद पॉइंट में आएगा, तो उन्होंने 5 का लिया है। सो अब कैसे सॉल्व किया उन्होंने यहाँ पे, xi क्या है आपका 5, डी एज्यूम क्या किया आपने 25, तो 5 माइनस 25 इज -20 अपॉन 5 सी, तो -4, 15 माइनस 25 इज -10 अपॉन 5 इज -2, 25 माइनस 25 इज 0 अपॉन 5 इज 0, 40 माइनस 25 इज 15 अपॉन 5 इज 3, 60 माइनस 25 is 35 upon 5 is 7. Multiplying di with fi, 3 into -4 is -12, 14 into -2 is -28, 32 into 0 is 0, 40 into 3 is 120, and 21 into 7 is 147. Solving the column of sigma fi di, we got sigma fi di as 227. Putting the values of sigma fi di into the formula, x bar equal to sigma fi di upon n multiplied by c, x bar equal to a plus sigma fi di upon n multiplied by c. Your assumed number is 25. Your fi di is 227 upon your n is 110. Multiplied by class length is 5. So 227 multiplied by 5 is 1135. Upon 110 you got the answer as 10.3182. Okay. Rounding, adding 10.3182 with 25, I got the answer as 35.3182. राउंड ऑफ करने के साथ द थर्ड नंबर, पॉइंट के बाद थर्ड नंबर 5 से बड़ा है, तो 31 का वो हो जाएगा 32, तो द फाइनल आंसर इज 35.32. मीन टैक्स सेल्स टैक्स पेड बाय दिस कंपनी इज 35.32. लेट मी क्लैरिफाई द एडवांटेजेस ऑफ मीन ऑल्सो. ओके, two points you just got to remember, nothing more than that. It is usually defined, it has a fixed mathematical formula है. डिफाइन क्या है usually, मतलब जो बताया गया वही है यहाँ पे. ओके, कि एवरेज निकालने का यही तरीका रिजिड यहाँ पे. ओके, ये मैथमेटिकल फार्मूला है. समझ दिस. नंबर 2, इजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट करना भी इजी है. ये सब ऑब्जर्वेशन को कंसिडर यहाँ पे करता है. ये सूटेबल है फॉर एल्जेब्रिक ऑपरेशंस के लिए. ये कंपैरेटिवली स्टेबल मेजर है क्योंकि ये हर, it means that means of all the samples of same size from the same population have comparatively less variations. अगर सेम साइज है तो वेरिएंसेस उनकी मीन में यहाँ पे काफ़ी कम आपको देखने को मिलेगा. एंड ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस, सभी को मैंने यहाँ पे इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं मीन के अंदर. सो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस देन, इट इज़ अनड्यूली अफेक्टेड बाय टू लार्ज और टू स्मॉल वैल्यूज. अगर बहुत बड़े नंबर है या बहुत छोटे नंबर है तो बहुत एवरेज, वी कैन नॉट कंसिडर द एवरेज एज द बेस्ट वन. इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर डेटा हैविंग क्लासेस विद ओपन एंड्स, जैसे लेस देन 10, मोर देन 50. अगर ऐसे क्लासेस दिए हैं तो पॉसिबल नहीं है इसके लिए मीन फाइंड करना. इट्स एग्जैक्ट वैल्यू कैन नॉट बी फाउंड ग्राफिकली. इसका एग्जैक्ट नंबर मीन का फ्रॉम द ग्राफ और इंस्पेक्शन वी कैन नॉट फाइंड इट आउट. इफ फ्यू ऑब्जर्वेशंस आर मिसिंग, अगर कुछ नंबर मिसिंग है तो अगेन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मीन हम फाइंड नहीं कर सकते. मीन इज नॉट ए गुड रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू फॉर द डेटा विच आर नॉट इवनली स्प्रेड अराउंड दर एवरेज. मीन वो तब बेस्ट नहीं है जब यहाँ पर डेटा इन्फॉर्मेशन आपको जो भी दिया है उसका एवरेज, मीन जो एवरेज वो इन्फॉर्मेशन के सराउंडिंग में नहीं हो, तो मीन वी कैन नॉट कंसिडर दैट मीन एज द बेस्ट एवरेज. यूजिंग मीन एज एन एवरेज इज नॉट अप्रोप्रिएट इफ ऑब्जर्वेशंस हैव वेरिंग इंपॉर्टेंस. ऑब्जर्वेशंस के इंपॉर्टेंस अगर अलग अलग है तो उस केस में मीन फाइंड करना सुटेबल यहाँ पे नहीं होता है. ओके, सो विद दिस टुडे आई कंक्लूड द इलस्ट्रेशंस ऑफ मीन. ओके, इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू हाउ टू सॉल्व द सम्स ऑफ एक्सरसाइज 3.1. आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू दैट. ओके, but you got to remember the formulas for mean. Okay, till that time kindly complete all the illustrations. Okay,
Write it for 2 times if you need so. Baki 1 time is also more than enough for me. The thing is that you should have understand what is to be done and how to calculate the mean. That is nothing else is there. Okay, and it's the most simplest chapter because mean you have already done in standard 10th. Thank you all. Thanks for the cooperation and support. Stay home, stay safe, and keep learning. Thank you again.